Hello everyone, this is Madhav Bharadwaj. I have secured All India rank 536 in UPSC CSE 2022 examination. This was my second attempt. My optional was management, and this video is primarily aimed at talking about my strategy of value addition for GS4 paper, that is ethics. So ethics was one paper that I really enjoyed, and I really liked that subject because of the strategy that I followed in attempting the questions and also preparing the notes for the same. So for GS4, one thing that I did was, in the beginning, for every word in the पेपर, जैसे कि इंटेग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, इन सब के मैंने फोरम आईएएस की रेड बुक और ओनली आईएएस की एथिक्स के नोट्स से 2-3 पेज के बेसिक डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, उन सब के नोट्स बना लिए. और आई मेड इट अ पॉइंट कि 2-3 पेज से ज़्यादा ये नोट्स ना हो. और जब मैं ये नोट्स बना रहा था तो अगर कोई एग्जाम्पल या कोई भी रेलिवेंट डायग्राम मुझे मिल रहा था, आई यूज टू एड इट टू माई नोट्स. वंस दिस वाज डन, आई thoroughly analyzed Topper's copy. So Topper's copy, especially Shruti Sharma ma'am's copy in last year, one thing that I realized out of her copy was that she had beautifully put in examples for every point she had written. So हर चीज़ एक एग्जाम्पल या डेटा या किसी चीज़ से सब्सटैंशिएटेड थी. तो वॉट आई डिड वाज, आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं भी यही करूँगा, कि मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ पे कुछ उसे बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक पॉइंट हो. तो इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें करी. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड स्काउटिंग फॉर एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल्स. तो एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज रेफर किए. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम वुड बी टॉपर्स कॉपी. जितनी मैं कर पाया उनके कॉपीज़ में से मैंने एग्जाम्पल्स उठाए. किसी टॉपर के नोट्स से मैंने एग्जाम्पल्स उठाए. जो ये नोट्स अवेलेबल होते हैं फोरम के या ओनली आईएएस के, उसमें से भी मैंने एग्जाम्पल्स उठाए. सेकेंड पार्ट ऑफ इट वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माइथोलॉजी. मैंने एग्जाम्पल्स उठाए. फॉर एग्जाम्पल, भीष्म, दशरथ, केकई, इन सब के मैंने एग्जाम्पल्स उठाए. उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स रीसेंट हैपनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज एन आईएएस कपल who became infamous for dog walking incident. I used that as an example. Next, and this is also a part of the syllabus, there are several thinkers. For example, John Stuart Mill, Immanuel Kant, और इन लोगों की एक philosophy है, एक thought process है. Apart from that, they also have a lot of quotes and examples in it. Mahatma Gandhi has a lot of quotes and examples that he has given, and he has been very ethical. For example, the 7 sins that he talks about. So I used all of them religiously and generously wherever I could put in, of course trying to make it as relevant as possible to the point, not forcing it. और मैंने हर किसी थिंकर का एक या दो कोट्स भी उठा लिए थे, जिनसे मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता था या मैं एंड करता था. तो विच काइंड ऑफ एड्स वैल्यू टू व्हाट यू आर सेइंग. और उसके अलावा मैंने अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें उठाने की कोशिश करी. फॉर एग्जाम्पल, DPSP, वो भी एथिक्स में एप्लीकेबल होती हैं. ARC की 4th रिपोर्ट, उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनसे मैं कई बार कंक्लूड करता था. सो दिस वाज माय ब्रॉड स्ट्रैटेजी फॉर एथिक्स. सो जस्ट टू समराइज, collect as many examples as possible from every sources. I'm keeping your eyes open. For example, every news that is sensational, for example, the Atiq Ahmed news, it is applicable at so many places in ethics. For example, law and order, objectivity, emotional intelligence, हर जगह पे ये example fit in करता है. So as many examples as possible, as many quotes as one can remember and put in, keeping the constitution in mind, mythology in mind, thinkers in mind, and keeping all of this in mind, and of course the second ARC 4th report. I think if we can sprinkle this around in the ethics answers, I think it certainly adds value, and it has helped me in scoring well in ethics in both my mains. So I mean, this is the strategy that worked for me, and I hope it works for you as well. So if you want, I have added my notes along with this video. You can scout out examples from it, as many as possible, and there's one thing to be able to actually collect those examples, and the second thing to be able to put it down on paper.
सो वो चीज़ प्रैक्टिस करने से आती है। तो मैंने एथिक्स के लिए कई बार और कई सारे टेस्ट लिखे थे, सो दैट आई एक्चुअली जो मैंने याद किए हैं वो मैं उसको यूज़ कर पाऊँ और सही तरीके से यूज़ कर पाऊँ। जैसे कि कोई भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ तो वो रेलिवेंट एग्जाम्पल सब्सटैंशिएट होगा, वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, और वो उस टाइम पर वो एग्जाम्पल याद आएगा या नहीं आएगा, दैट विल ऑल्सो कम विद प्रैक्टिस। सो आई प्रैक्टिस्ड ऑल्सो एक्सटेंसिवली. So this is my broad strategy regarding ethics, that is GS4 paper, and I would want to thank DKT for providing me this opportunity to talk about my GS4 strategy. Thank you.